नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है कि एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। योगा इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन बट सेटिंग द राइट इंटेंशन and your effort on that intention. It focuses on bringing harmony between mind and the body. इसी थॉट के साथ आज की वीडियो कुछ बेसिक स्ट्रेचेस पर है जो आप अपने वार्म अप्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए। आप इन जेंटल मूवमेंट्स को 8 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। These stretches can be done in any age, by any body size. These can be done after at least 2 hours of the meals. These can be before main yoga asanas or in general can be performed to feel fresh and better. आप चाहे ऑफिस में बैठे हुए थक गए हों या घर पर बैठे बैठे आलस आ रहा हो, खड़े हो जाइए, इन स्ट्रेचेस को और वार्म अप्स को कीजिए, आप फ्रेश महसूस करेंगे। मेजर जॉइंट्स दैट वी नीड टू स्ट्रेच ड्यूरिंग वार्म अप्स आर फिंगर्स, wrists, elbows, hip, knee, shoulders, neck, spine. स्पाइन के लिए हम ट्विस्ट करते हैं, बेंड करते हैं एंड स्पाइन, ankles and toes. Warm up and stretching are essential components of yoga practice for several reasons. Warm up exercises increases blood flow to muscles, making them more pliable and ready for the more intense poses or stretches that follow in a yoga session. Proper warm-ups reduces the risk of injuries by preparing the body for physical exertion and ensuring that muscles and joints are sufficiently flexible. Stretching during warm-up and throughout the practice improves flexibility over time. This allows for greater range of motion in yoga poses and in daily activities. Muscles that are warmed up and stretched perform better. This can lead to improved posture, balance, and overall execution of yoga poses. Warm-up exercises help in focusing the mind and transitioning into a more mindful state, which is crucial for the meditative aspects of yoga practice. Regular warm-up and stretching in yoga contribute to long-term flexibility, joint health, and overall physical well-being. Incorporating these practices into your yoga routine not only enhances the physical benefits but also supports a deeper connection between mind and body during practice. उठिए और पहला कदम उठाइए। धन्यवाद।